Hello children, let us understand chapter 4.1, that's fibers and fabrics of your fashion studies book class 12. Although ये आपने पहले 11th में भी किया है fibers और fabrics, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा portion है इस chapter में fibers and fabrics का. So एक short video है for that particular thing, and then the second part of this chapter is about underlying fabrics. So I'll be creating another video for that to so that you are able to differentiate in between both the portions. Now this particular unit is very important because इसमें से आपका board practical में भी है portion और board एग्जाम में थ्योरी एग्जाम जो अब होगा टर्म 2 का उसमें भी है. सो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स सबसे छोटा कंपोनेंट है आपके फैब्रिक का. फाइबर जब हम कंबाइन करते हैं तो हम एक यान बनाते हैं, और यान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका जो स्टिचिंग के लिए आप थ्रेड यूज करते हैं, वो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यान का. और ये yarns को हम इंटरलेस करते हैं या इंटरलूप करते हैं टू डेवलप अ फैब्रिक. So fibers are the basic components of textile fabrics. Without fibers, we won't be able to develop fabrics. Each fiber, it basically has its own unique characteristics, or I should say advantages or properties or disadvantages. So हर एक फाइबर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है. कोई इसीलिए गर्मी के लिए बना है, कोई सर्दी के लिए बना है. तो we in through this particular chapter we are going to learn about that. The fabric character, it can be changed. So एक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो स्वेट को ऑब्जॉर्ब करता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक उसका चेंज भी किया जा सकता है. एंड हाउ कैन वी डू इट? वन, बाय चेंजिंग द यार्न स्ट्रक्चर. सो पहले अगर आप टोटल कॉटन यूज कर रहे थे तो अब आप उसके साथ में कुछ सिंथेटिक मटेरियल यूज कर सकते हो. देन इज द टाइप ऑफ वीव, द काइंड ऑफ अ वीव पैटर्न that you've used to develop that fabric. Twill weave, plain weave, basket weave, अलग अलग टाइप की वीव्स होती है जिनको आप टेस्ट कर सकते हो अपना फैब्रिक बनाने के लिए. एंड दैट इज हाउ जो फैब्रिक के कैरेक्टरिस्टिक है वो भी उससे चेंज हो जाते हैं. देन इज द फिनिशिंग दैट इज गिवन टू द फैब्रिक. सो कॉटन की एक मेन क्या होता है कि वो रिंकल्स आ जाते हैं उस पर, तो एक फिनिश दे सकते हैं रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश. तो उससे कॉटन ही है मटेरियल, बट उसकी फिनिशिंग चेंज करने से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे कैन बी चेंज्ड. The original personality is still evident in the final fabric and is important to its use and care. So whatever fabric that you develop, उसका जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो उसको डेवलप करके उसका टेस्ट करके ही हमें पता चलता है. एंड दैट इज हाउ वी कीप experimenting and developing new fibers and fabrics. Initially, fabrics were made from natural sources, but the rapid technological development in mechanization has led to new techno-textiles. So earlier, when the fibers were introduced, when the fabrics were developed, वो सिर्फ natural resources से ही बनते थे. But बाद में because इतनी demand बढ़ गई लोगों की, तो इसीलिए and to meet up to those demands, the machines were invented, and that is how the new set of fibers and fabrics, that is the synthetic or the man-made fibers, were developed. In the recent years, a plethora of new fabrics have come into the market, which is product of chemical laboratory, or in other words, are man-made. So this is what I was talking about, man-made or the synthetic material. There is a variety of fabrics available in the market. And what is that variety? It is natural, man-made, or the blended fabrics. And they are a blend of natural and man-made fibers, or it can be both natural combined together or two or more man-made combined together. So blending is more than one fibers combined together to form a new fabric.
and this particular fabric has characteristics of both the fibers. ना नेचुरल फैब्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं वो दो तरह के फाइबर्स से बनता है, एक एनिमल सोर्स से और दूसरा प्लांट सोर्स से। जो एनिमल सोर्स से बनते हैं उनके एग्जाम्पल है सिल्क, वुल, फर और लेदर, और जो प्लांट सोर्स से बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स है कॉटन एंड लिनन। लिनन जो है फ्लैक्स प्लांट से बनता है। सो एनिमल फैब्रिक्स आर procured from animals. Plant fabrics are they originate from plants. So ये मैंने इस तरह से इसलिए दिया है so that you can even write down in the same manner in your notebook for learning purposes also difference in between the natural fibers, that is the animal fiber, and the plant fiber. Now some experts do not include fur and leather in textile fabrics as they are skins of animals. Why they don't include it? Because उसमें कोई yarns नहीं दिखते हैं, वो animal की skin होती है. Some include them as an alternative to textile fabrics as they are used for both garment and household products. तो basically कुछ use नहीं करते because वो कहते हैं कि वो animal skin से बनता है, और कुछ कहते हैं कि हम use करते हैं because ये आपका fabric का alternate की तरह use कर सकते हैं. So इसीलिए वो एक animal source से natural fabric बनता है. Then as far as the plant is concerned, the most commonly available and used plant-based fabrics are cotton and linen. Now, what are the characteristics of fabrics? They, let us now understand both natural and synthetic fabrics and their characteristics, that is advantages and disadvantages. So natural fabrics, they have the irregularities and sensitivity inherent in natural things. The advantages of natural fibers are कि सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है उसमें, कॉटन में अब्जॉर्बेंसी एंड ब्रीदेबिलिटी. सो वो अब्जॉर्ब कर लेता है प्रेसिपिटेशन, और वो गारमेंट जो है सफोकेटिंग नहीं लगता हमें जब हम कॉटन के गारमेंट पहनते हैं. तो दैट इज वाई वो ब्रीदेबल होते हैं, वो पोरस स्ट्रक्चर होता है उनका. Thus, they are more responsive to climate changes in temperature and humidity, and are hence more comfortable to wear in a variety of climatic conditions. तो आप उनको समर में भी पहन सकते हो, विंटर में भी पहन सकते हो because of their qualities. Disadvantage क्या है? Disadvantage कॉटन और लिनन का ये है कि वो इलास्टिक नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं होते. और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वो रिंकल आप बहुत जल्दी हो जाते हैं. और ये जो रिंकलिंग आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए हम स्पेशल फिनिशिंग भी देते हैं जिसको हम रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश भी बोलते हैं. एंड व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ अ फिनिश टू दिस मटेरियल, इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल. Then you have a term here that's mercerized cotton. Mercerized cotton is basically an example of wrinkle resistant finish. और ये जो है wrinkle resistant finish जो है ये केमिकल्स यूज करे बिना बनती है. ये कैसे करते हैं? ये जो yarn होता है उसको हाई स्पीड पे ट्विस्ट करते हैं, and when they do it in this manner, they add luster, that is shine, to this particular yarn and also make it wrinkle resistant. जब सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक एज अ नेम सिंथेटिक मैन मेड, तो वो केमिकल से बना है, केमिकल प्रोसेस से बना है, एंड दैट इज वाई ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता. ये नेचर में कहीं पे खत्म नहीं होगा. जितने सिंथेटिक मटेरियल्स हैं दे विल स्टे ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर इयर्स. पर जो नेचुरल फैब्रिक्स है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिकम्पोज हो जाते हैं. So synthetic fabrics have their beginnings in chemical solutions that are forced through tiny holes into chemical bath or air chamber. These harden into long ropes of fibers that are later woven into fabrics. So लंबे लंबे yarns वो लोग draw कर लेते, and that is how they get started with weaving or knitting this material. Advantage क्या है? जो डिसएडवांटेज था नेचुरल का वो इसका एडवांटेज है. तो ये इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है, और ये रिंकल रेजिस्टेंट भी है.
सो जो उसका एडवांटेज था वो यहाँ डिसएडवांटेज है, और जो उसका डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ का जो डिसएडवांटेज है वो वहाँ का एडवांटेज था। सो डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक का? ऑलमोस्ट ऑल मैन मेड फाइबर्स आर लेस पोरस, मतलब ये ब्रीदेबल नहीं होते हैं, बहुत ही कम ब्रीदेबल होते हैं। दैट इज वाई जब गर्मी में अगर आप कोई सिंथेटिक गारमेंट पहनो तो आपकी बॉडी के साथ चिपकता है। So it is not, one doesn't feel comfortable wearing these material, especially during summer season. After this, there is a term here that's thermoplastic, or another thing that comes out of it is thermoplasticity. And the next is heat set designs. Thermoplasticity, as the name is thermoplastic, thermo means heat. So heat pass करके mold करते हैं material को into particular shapes. So certain material, certain synthetic material like nylon, जिसको हम हीट पास करके हम उसको अलग अलग शेप में फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम परमानेंट प्लीट्स दे सकते हैं किसी स्कर्ट में या ड्रेस में, नायलन की बना के परमानेंट प्लीट्स दे सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू iron it again and again to create those pleats. Then next is the Japanese designers, जिन्होंने ये हीट सेट प्लीट्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये जो हीट सेट प्लीटिंग का जो टेक्निक है, these Japanese designers are masters of this particular technique. And another thing here is कि आप ये जो प्लीटिंग है किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। आप फाइबर्स की स्टेज पे कर सकते हो, आप यार्न की स्टेज पे कर सकते हो, या जब आपका फैब्रिक रेडी हो गया आप तब भी कर सकते हो। It entirely depends on which stage you wish to do it. A common problem with synthetics is the large number of terms used to identify them. So बड़े बड़े टर्म्स को यूज करते हैं वो, और वो साइंटिफिक टर्म्स होती हैं। सो जो कंज्यूमर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। सो इसीलिए कई बार जो है सिंथेटिक्स को मार्केट में अलग अलग नाम से बुलाने की जगह वो सीधे बोल देता है शॉपकीपर ये सिंथेटिक फैब्रिक है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि ये एक्रिलिन है, कि ये एक्रिलिक है, कि ये नाइलिन है, वो सिंपली बोलता है सिंथेटिक मटेरियल है। They have given an example here, that is acrylic, which can be called in the industry as orlon or acrylen. But हम लोग acrylic के नाम से जानते हैं इसको, और acrylic जो मटेरियल है, man made material या synthetic material, ये wool के substitute की तरह यूज किया जाता है। In India, the consumer generally recognizes the fabric by the trade names or the common group terms by which a shopkeeper might be referring to them. Second problem is of the common consumer being misled by the shopkeepers, selling polyester blended silk as khadi silk and claiming it to be pure silk. So ये तो बहुत common सी चीज है कि प्योर सिल्क मांगते हो वो खादी सिल्क दे देता है, और वो बेसिकली या फिर वो ब्लेंडेड सिल्क पकड़ा देता है आपको। एंड that is how the shopkeepers try to fool the customer. So it is important कि आप अगर कुछ भी purchase करने जा रहे हैं, so you should be aware about who are selling it, what is the kind of review that people are giving about them, as that helps you take a decision about buying the product. Hence, the consumer needs to learn to identify the commonly used fabrics, as most of the fabrics cannot be identified only by their appearance. सिर्फ देख के तो नहीं पता चलता ना हर बारी फैब्रिक को कि ये कौन सा है, तो कंज्यूमर को स्टडी खुद करना पड़ेगा जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंड इज जो उसके ऊपर जो बोल्ट लगा होता है, बोल्ट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। जिस कार्डबोर्ड के अराउंड रोल करते हैं हम फैब्रिक को, उस बोल्ट पे भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है फैब्रिक की, या फिर इस टाइप से स्टिकर्स लगे होते हैं, from where you get to know that who is the manufacturer, what is the fabric content or the fiber content of this particular material. Then are blended fabrics. As I did mention, blended fabrics क्या होते हैं? Combination of 2 or more different fibers. अब ये 2 या 2 से ज्यादा फाइबर्स आपके सारे नेचुरल भी हो सकते हैं, सारे मैनमेड भी हो सकते हैं,
या दोनों natural और man-made का blend भी हो सकता है. Like here we have an example that's terracotta. Terracotta is a blend of cotton. Cotton जो natural material है 65%, और terylene जो synthetic material है वो 35%. Another example that I would want to give here is cotton silk. Cotton silk fabric बहुत common है Indian market में, and it is a blend of cotton and silk. और दोनों natural materials है, so it can be both natural materials or both synthetic, or as I said, a synthetic and a natural material too. Thank you so much for watching, and children, do not forget to like this particular video, subscribe to the channel, and I will be sharing a part 2 of this particular chapter also with you soon. Thanks for watching.